Hello my dear student of class 12 and class 10 also. These are the common topics for the classes 10 and 12. Today I am going to discuss the combination of resistor in which mixed combination. In previous video we have seen series combination and parallel combination. Today I am going to explain mixed combination of resistances or resistors. So here is the example and it is taken as type 1. This is the combination. 5 resistors are connected in this way and we have to find out the equivalent resistance of this combination. Equivalent resistance is the resistance used in place of many resistors connected in mixed or series or parallel, which produces same type of effect, same effect as is produced by all the resistors. ये सभी रजिस्टर्स में ने किसी सर्किट में जोड़ दिया जाए तो जो भी ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट जितना भी उनसे पास हो रहा है, अगर वैसा ही इफेक्ट कोई अकेला सिंगल रजिस्टर इन सभी के जगह जोड़ दिया जाए तो वो अकेला रजिस्टर अगर इसी के तरह इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो उस सिंगल रजिस्टर को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट रजिस्टर और उसके रेजिस्टेंस को कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. पॉइंट ए एंड बी. पॉइंट ए एंड बी मे बी कनेक्टेड बिटवीन ये सोर्स ऑफ सेल key, ammeter, etc. It may be connected like this. V volt, positive and negative, key is on. So we have interest to find out the equivalent resistance. First of all, we will make the equivalent circuit of this. We have for this, we will put here A, B, here is C, here is D. So there are 4 points A, B, C, D. So we have taken here the points A, here it is B, C and D. A and B are at the two extremes, C and D are middle, so we have taken here. So we can see that between A and C there is a resistance having 5 ohm. A and C. So we will draw here a resistance 5 ohm connect between A and C. And then between C and D we have 100 ohm resistance. So between C and D we will connect here 100 ohm. 100 ohm resistance. Now come to between C and B. C and B we have 10 ohm. So we will connect here 10 ohm resistance. 10 ohm resistance. Now between A and D there is 10 ohm resistance. Here it is 10 ohm resistance. And between D and B there is 20 ohm resistance. So we will take here 20 ohm. And between A and B there is a cell of potential V, key, and there is ammeter. This is key, this is ammeter, V plus and minus. So this is the equivalent. This is the equivalent circuit or equal circuit. This circuit may be represented like this. Now after this we will check, we can mark it as this resistance is R1, R2, R3, R4 and this is R5. So this is R1 and then A and D, between A and D R2, between A and D this is R2, between C and D R3, this is R3, between
D and B, it is R4, and between C and B, it is R5. It is R5. This is R5. So there are 5 resistors connected. You may have values. You may have R resistance like this. So what we will check here? First step, how to solve these two. These two are similar. दोनों ही सेम है. तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को पहले समझना है. इससे हमने ऐसे ड्रॉ किया है, यानी कि दिस और दिस आर सिमिलर सर्किट. तो ऐसे जब रहें तो ऐसे में इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो पहला चेक करेंगे. तो हाउ टू सॉल्व इज फर्स्ट स्टेप वन चेक करना है. चेक whether R1 by R2 is equal to R5 by R4. ये अगर बराबर है कि नहीं है, और R2 by R1 is equal to R4 by R5, or we can check here R1 by R5 is equal to R2 by R4. ऐसे भी चेक कर सकते हैं. और we can check this R5 by R1 is equal to R4 by R2. If all these are satisfied, any one of them are satisfied, if check whether this is equal to this, then what we will do? If it is true, check whether R1 by R2 is equal to R4 by R5, or R2 by R1 is equal to R4 by R5, or R1 by R5 is equal to R2 by R4, or R5 by R1 is equal to this. If it is true, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हम लोग ये चेक करने के बाद हम लोग अगर सही है, if R1 by R2 is equal to R5 by R4, if this is equal to this, then what we will do? Then potential at C will be equal to potential at D. Potential at C will be equal to potential at D. Hence, no current will pass through R3. तब ऐसे कंडीशन में R3 से कोई करंट नहीं जाएगा. और जब कोई करंट नहीं जाएगा, therefore R3 is useless, or we can say R3 may be removed from the circuit. R3 को हम लोग सर्किट से निकाल सकते हैं. अगर ये दोनों बराबर हैं, इसके रेशियो इनके बराबर है, रेशियो के बराबर हैं, तब हम लोग इससे कोई करंट नहीं जाएगा. यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और सेम हो जाएगा तो इससे कोई करंट नहीं पास होगा. और जब कोई करंट नहीं पास होगा तो हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. So we will eliminate this resistance. Now when it is eliminated, आप चेक करके देखेंगे. यहाँ देखिए ये 5 ओम है. 5 ओम R1 by R2 is equal to कितना आ रहा है? 5 by 10 is equal to 1 by 2, and similarly R5 by R4 is equal to 10 by 20 is equal to 1 by 2. Therefore R1 by R2
2 is equal to R5 by R4. Hence R3 can be removed from the circuit. इसको रिमूव कर देंगे. अब इसको रिमूव कर देने से सर्किट मेरा बन गया इस तरीके से, ऐसा हो गया. नाउ हम लोग क्या करेंगे इसके बाद भाई? इसके बाद हो गया R1 एंड R5 आर इन सीरीज. तो इसके जो हो जाएंगे R डैश हो जाएंगे और इक्विवेलेंट हो जाएंगे R1 प्लस R5 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 ओम. और इसी तरह से R2 एंड R4 ये भी सीरीज में हो जाएंगे, R इन सीरीज, ये भी सीरीज में हो जाएंगे. तो सीरीज में हो जाएंगे तो R डबल डैश मिल जाएंगे इनके इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएंगे R2 प्लस R4 के बराबर हो जाएंगे. अब तब हो जाएंगे 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 ओम. तब इसके इक्विवेलेंट यहाँ से बन जाएंगे कि इनके बीच में रेजिस्टेंस जो है ये 30 ओम का आ गया. और इधर जो है ये R डबल डैश हो गए और इधर जो हो गया ये रेजिस्टेंस आ गया जो कि R डैश हो गए, R डैश हो गए 15 ओम और ये हो गया 30 ओम. Now these two are in parallel. Now we can write here R dash and R double dash are in parallel combination. Therefore 1 by R equivalent is equal to 1 by R dash plus 1 by R double dash is equal to 1 by 15 plus 1 by 30 is equal to 30. This is 2 plus 1, 3 by 30 is equal to 1 by 10. Therefore equivalent R is equal to 10. So this is how to solve the such type of problem, mixed combination. If type 2, now come to the type 2, same circuit. You can see it is the same to the type 1, but difference is that here it is R1 by R2 is not equal to R4 by R5. This is not equal to, इनके रेशियो इनके बराबर नहीं है. तब क्या करेंगे? How to solve? Then we will use Kirchhoff's law. Kirchhoff's law of electricity. We will distribute the current from here. How the distribution of current will be done? ये ऐसा है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ से करंट जो है ये I करंट आ रहा है और यहाँ से करंट I बाहर जाएगा. यहाँ पर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में. इधर चले जाएंगे I1 तो इधर आ जाएंगे I माइनस I1. इस तरीके से रखेंगे. यहाँ आने के बाद ये I1 आके मिलेगा और यहाँ आने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कौन सा? यही I माइनस I1 विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो इधर में मान लीजिए जो करंट जाएगा ये I2 हो गया. तो इधर जो बचेगा जो है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट विल बी 0. यहाँ से ये जा रहा है I माइनस I1 तो ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है I2, ये इतना हो गया. और इधर में जो जाएगा मान लीजिए X तो ये X इज इक्वल टू 0. अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0 एंड current moving towards the point, going towards the point, it is taken as a positive and leaving out of point is taken as negative. So according to that we have written this one. So what will be the value of X? That will be equal to Ix is equal to I minus I1 minus I2. This will be the current along this direction. Now this is point C, this is point D. This is at C.
Now at D, how you will distribute the current? I1 is coming from this side and this amount of current, X current is coming from this side, that will move along that direction. तो यहाँ पे जो मिलेगा ये मान लीजिए कि कोई करंट जो होगा that will be equal to I1 plus this current I minus I1 minus I2 is equal to, इधर की ओर y जा रहा है मान लीजिए, is equal to y. ये मिल जाएंगे. I1 will get cancelled, it will be I minus I2. Y is equal to I minus I2. X is equal to this one. So we have to calculate the current in each branch, distribute the current in each branch like this. Here from here it is coming I2. Here Y current is coming. So total current should be here at this point at B. At B, how Y is coming towards this and this is also coming. So Y plus I2 and is it equal to here in this direction I. This should be I. This should come equal to I. So we will calculate here. This is equal to Y is here I minus I2 plus I2. This is equal to I. So again here I current is living out of this circuit along B direction. So this is the way how to distribute the current in different arms of the complicated circuit. Now we will use the Kirchhoff's loop rule to draw, as we have three variables. One is I, another is I1 and I2. Here it is three variables whose value is to be determined. So we will require three equations. Considering three loops using KVL, Kirchhoff's voltage law को यूज करके अब यूज बनाएंगे यहाँ पे. क्या मिलेगा? Loop number 1 is this, loop number 2 is this, loop number 3 is this. So we will get the solution. So loop 1, it is loop 1, this is loop 2 and all together is loop 3. So we will use the Kirchhoff's law, we will calculate the three equation and then after solving we will get the value of current and then after that we can calculate the equivalent resistance. Thank you very much.